Hello students, now we are doing physics topic conservation of linear momentum and velocity of center of mass of a system, class plus 1। ਅੱਜ ਅਸੀਂ class plus 1 ਦਾ physics ਦਾ topic conservation of linear momentum and velocity of center of mass of a system ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। It's a part of the chapter center of mass। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ conservation means conserve ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ linear momentum and velocity ਕਿਹਦੀ center of mass, center of mass किदा वा system। Now consider a system of n particles। We have a system of particles of masses m1, m2, m3 up so on mn। System of n particles। साढ़े कोल एक system आ means एक body है जिहदे किन्ने पार्टिकल्स ने n पार्टिकल्स ने। फर्स्ट पार्टिकल मास m1, पहले दा मास m1 then m2 then m3 up so on। nth पार्टिकल दा मास mn। मूविंग विद रिस्पेक्टिव linear velocities v1, v2, v3 up so on vn vectors। The particle of mass m1 moving with velocity v1 vector, particle m2, second particle whose mass m2 moving with velocity v2, similarly particle 3 whose mass is m3 moving with velocity v3 vector, and up so on the particle whose mass mn moving with velocity vn vector। जो साडा सिस्टम आ वो किया मूव हो रहा है मीनस n पार्टिकल सारे के सारे किया मूव आ गति कर रहे एंड हरेक पार्टिकल अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी दे नाल किया अगे वध रहा है। नाउ सपोज असी कल्पना कर रहे हैं, सपोज मान लो दैट आर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल एफ वेक्टर एक्ट ऑन द सिस्टम। नाउ सपोज फॉर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी या सिस्टम के ऊपर असी किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी है। In addition, the particles of the system exert internal force on each other. However, as said earlier, the internal force acting on the particle of the system just cancel out provided the forces are central in nature and Newton's third law of motion hold। Now important part I will be discussing, body have n particles of respective masses। All the particles exert internal force on each other। ਜਿਹੜੇ बॉडी ਦੇ पार्टिकल्स ने हरेक पार्टिकल एक दूजे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ खिंच रहा वा। बट एज वी हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस टॉपिक्स, जिमें कि असी पहले टॉपिकों के एक्सप्लेन किया है
ਨੈਟ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੀਨਸ ਐਕਟ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ center. And secondly, Newton's third law of motion hold. Newton ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ, every action equal and opposite reaction ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਲਡਸ। Therefore, total linear momentum of system of n particles. Now we know, we represent the momentum with P, and what is the formula of momentum? Mass into velocity. But here we are discussing about the n particles. So total momentum of the system of n particles, P momentum m1 v1 vector, momentum mass into velocity. So we have n particles. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ particles ਨੇ? n particles ਨੇ। First the mass m1, velocity v1 vector. Similarly second particle. So here m2 v2 vector. Similarly for third particle, plus up so on, plus mn vn vector. Now according to Newton's second law of motion, we have, what is second law of motion? Newton's law गति का दूसरा नियम की कहता है? rate of change of momentum directly proportional to the applied force. Now we have applied the external force F external. ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ F ਵੈਕਟਰ external equal to rate of change of momentum dp vector over dt. So put the value of p vector from here, so it becomes a rate of change of momentum is d over dt m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector plus up so on mn vn vector. Now in case, now we are considering the next case, in case no external force act on the system or total external force on the system is zero. So suppose टोटल एक्सटर्नल फोर्स बारी वाल जो ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲ ਬਾਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? then above equation reduces to means d over dt m1 b1 vectors m2 v2 vectors plus m3 v3
3 vector plus up so on plus m n v n vector equal to 0 because no external force applied on the system. अगर साढ़े को हुण केस इस तरह बन गया we are not applying the external force on the system, then above equation, this equation reduces to d over dt m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector plus up so on mn vn vector equal to 0. Now students look carefully. d over dt m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus up so on. Now we know when derivative 0, if the term is constant term ਦਾ जो डेरीवेटिव आ वो की होंगे साढ़े कोले 0 होंगे. अगर साढ़े कोले कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव की होएगा 0. Now in this equations the terms in the bracket have derivative 0, means the terms in the bracket have the value constant, or m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector plus up so on plus mn vn vector equal to a constant vector. Consider it equation number 1. किसी रकम का डेरीवेटिव 0 कदों होंदा है जदों वो कांस्टेंट हो. Now the equation describes the law of conservation of linear momentum for a system of n particles. ये वाली जी साढ़े को इक्वेशंस आ गई है, ये किनू वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कीदा फॉर ए सिस्टम ऑफ n particles. Now further which states that की स्टेटमेंट आ रही साढ़े को, if no external force act on a system, we have taken the case when no external force applied on the system, then no external force act on a system, then total linear momentum of the system remains constant. ये वाली सानू इक्वेशन की दस रही है, अगर असी बाहरी बल नहीं अप्लाई किया तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किया remains constant. Again, if capital M is the total mass of the system and V vector whole of the system, V vector the velocity of center of mass. V vector साढ़े को किया velocity of center of mass जिथे असी body da mass assume कर लिया, and which have the representation by capital M, total mass. The velocity of center of mass of the system, then now
कैपिटल M total mass, V velocity of center of mass equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector plus up so on mn vn vector equal to 0 equal to vn. Consider it equation number 2. Now we have two equations, m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector up so on mn vn vector is equal to mv vector. And from equation number 1, m1 v1 vector m2 v2 vector plus m3 v3 vector up so on a constant vector. So from equation 1 and 2 we have m v vector equal to a constant vector. दोनों इक्वेशनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, a constant vector. Now we know mass of the body remains constant, mass की वैल्यू तो फिक्स है, so it becomes or v vector equal to a constant vector. So what we have concluded, therefore in an isolated system means किया no external force acting on the system, no external force acting on the system, the center of mass of the system moves with constant velocity. ਤਾਂ ਉਹ constant velocity एक स्थिर गति ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, स्थिर गति ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. means mass moves with the constant not a variable. ਕਿਹੜੀ velocity ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ? constant velocity ਹੋਵੇਗੀ. ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲਗਾਤਾਰ velocity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਕਿਹੜਾ? in an isolated system. No means no external force acting on the system. The center of mass of system moves with the constant velocity. Now in the next videos we will be discuss numerical related to center of mass. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ.